Good morning. My name is Jay Karma and this is my demo video for my CV. In this lecture, I will be taking 2 points. First is electrode potential and second is Nernst equation. I am also going to solve a few questions related to JEE. So let us begin. First of all, consider a cell in which we have taken some liquid. This liquid can be water also. In this liquid, if we present one metal rod, तो ये metal rod जो है वो dissolve होने लगेगी. Now this metal rod dissolves because an entropy has a tendency to spread. जब भी हम किसी पानी में कोई भी metal rod रखेंगे तो वो dissolve होने लगेगी. See, आपने ये observe किया होगा जब भी आपने किसी कॉपर के बर्तन से पानी पिया हो तो कॉपर का टेस्ट आता है. इसी तरह से किसी एल्यूमिनियम के बर्तन से भी पानी पिया होगा तो भी टेस्ट अलग आता है. इसका ये मीनिंग है कि वो मेटल थोड़ा बहुत तो उस पानी में डिसॉल्व हुआ ही है. क्यों होता है? लाइक आई सेड, जैसे हमने 11th क्लास में एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था कि जब भी कोई गर्म बाल्टी होती है तो अपने आप ठंडी होने लगती है. बिकॉज एंट्रोपी हैज अ टेंडेंसी टू स्प्रेड, सो इट अलाउज द एनर्जी ऑफ द बकेट टू स्प्रेड आउट. लेकिन ये इनफाइनाइटली फिर वो ठंडा होते होते पानी एकदम एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं पहुंच जाता. वो तब तक ही ठंडा होता है जब तक आसपास का टेम्परेचर अचीव ना कर ले. तो जब तक बाल्टी का टेम्परेचर जो सराउंडिंग है उसके टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए तब तक वो ठंडा होने लगेगा. सिमिलरली वैसे ही जब भी आप कोई भी मेटल को पानी में रखोगे वो डिसॉल्व होने लगेगा. कब तक डिसॉल्व होगा? जब तक कि वो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन अचीव नहीं कर लेता. ये कंसेंट्रेशन डिपेंड करता है मेटल की एफिनिटी पे. अब एफिनिटी एग्जैक्टली मैथमेटिकली क्या है ये मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट दे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू रिएक्ट. ये डिपेंड करता है मेटल कितना रिएक्टिव है. सो कितना रिएक्टिव है इस पर डिपेंड करेगा कि कितना कंसेंट्रेशन वो अचीव कर सकता है. आफ्टर दैट इट विल अचीव इक्विलिब्रियम. जब वो कंसेंट्रेशन अचीव हो जाएगा उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर वो और डिसॉल्व नहीं होगा. अब जब मैक्सिमम कंसेंट्रेशन अचीव कर लिया है किसी मेटल ने तो ऑफ कोर्स सॉल्यूशन में थोड़ा मेटल आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जिंक है, जिंक मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन बनाएगा. तो ये मेटल आयंस सॉल्यूशन को एक पॉजिटिव चार्ज दे देंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मेटल के अंदर ही रहेंगे वो मेटल को एक नेगेटिव चार्ज दे देंगे. इसके कारण सॉल्यूशन और मेटल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. So what is electrode potential? It is the potential difference between the solution and the metal rod. Potential, okay. Yes, so ये जो difference है potential का, इसी को हम electrode potential कहते हैं. और the relative excess potential on the rod with respect to the solution is called electrode potential. हम यहाँ solution पे जो potential है उसको मान लेते हैं 0. जस्ट आर्बिट्ररीली. तो जो भी इससे ज्यादा या इससे कम पोटेंशियल रॉड पे है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है, इसलिए जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो नेगेटिव आता है. अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है. जैसे इनिशियली हमने पानी कंसिडर किया था, अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा सोल्यूशन लेते हैं, जैसे फॉर स्टैंडर्ड वैल्यूज हम यहाँ पर 1 मोलर जिंक, अब जिंक सल्फेट ले लीजिए. सो 1 मोलर जिंक सल्फेट हम कंसिडर कर लेते हैं. तो अब यहाँ पर जिंक का जिंक 2+ आयन का कंसेंट्रेशन पे कितना है? 1 मोलर, और उसी में हमने जिंक की रॉड रख दी है. सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, आई विल राइट दिस एज Zn2+ Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट. तो आपने अपनी फिजिक्स की क्लास में पढ़ा ही होगा कि पोटेंशियल का क्या मीनिंग है. पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो जब यहां पे चार्ज डिफरेंस आ ही गया है तो अगर आपको यूनिट चार्ज को इस प्लेस से उठा करके उस प्लेस तक ले जाना है, देन यू विल हैव टू परफॉर्म अ वर्क, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क. नाउ वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल. तो चूंकि चार्ज डिफरेंस है, देयर हैज टू बी सम पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल. और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनता है
इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कह देते हैं. सो नाउ आई थिंक दिस टर्म इज क्लियर. वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि ये पोटेंशियल डिफरेंस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट विल डिपेंड. सो देयर इज वन क्वेश्चन हियर, शुड इट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया और नॉट. क्या ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा? तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि हमने इसे सफिशिएंट टाइम दिया था इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए. तो बिकॉज ये एक इक्विलिब्रियम पे बन रहा पोटेंशियल है, सो वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट द सरफेस एरिया. अगर मेटल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा एटम्स एक समय पर रिएक्ट कर पाएंगे, बट फिर भी वो कंसंट्रेशन तो उतना ही अचीव करेगा जितना कि उसकी नेचुरल एफिनिटी अलाउ करती है. तो जितना उसकी नेचुरल एफिनिटी होगी उतना कंसंट्रेशन अचीव होगा. अब इसमें सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो जल्दी अचीव कर लेगा, सरफेस एरिया कम है तो धीरे अचीव करेगा, बट अचीव तो उतना ही पोटेंशियल कर पाएगा जितना उसकी नेचुरल एफिनिटी है. सो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और नेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर नहीं करता. इसका ये मीनिंग है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मे भी उतना उस पर अभी हम टेम्परेचर को ये नहीं देख सकते कि वो बढ़ेगा या कम होगा. डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आपने यूज़ करा है, कौन सी टाइप की रिएक्शन आप बात कर रहे हैं. तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. तो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड करेगा, और नेचर यानी कि कौन सी मेटल आपने ली है, जिंक लिया है, आयरन लिया है, कॉपर लिया है, जो भी मेटल आपने लिया है उसके ऊपर भी यह डिपेंड करेगा. सो कंसंट्रेशन यानी कि यहाँ पर जैसे हमने पहले पानी की बात करी थी, फिर हमने बोल दिया 1 मोलर जिंक सल्फेट है, और जिंक सल्फेट है तो जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ रहा था मैंने कहा स्टैंडर्ड वैल्यू है. स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब जब हमने कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तब क्या वैल्यू आती है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू. तो स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हमने ई नॉट वैल्यू यूज करी. तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और नेचर पे भी डिपेंड करता है. सो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे नहीं करेगा. ये बार बार क्वेश्चन आए हैं, सरफेस एरिया पे करता है नहीं करता है, तो नहीं करता है. मूविंग ऑन. अब इन तीनों पे किस तरह का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इन तीनों के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करता है. सो दैट इज आंसर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इक्वेशन E equal to E naught minus RT by NF log Q. This equation is called the Nernst equation. Now, Nernst equation जो है ये बताती है variation of E. This is electrode potential. The variation of electrode potential with temperature, concentration of reactants and products, and the nature of electrodes. So E naught जो है ये बताता है कि कौन से इलेक्ट्रोड्स आपने कंसिडर करे हैं, ये नेचुरली फिक्स होता है जैसा अभी हमने देखा. तो E naught you can't do anything, it depends on nature. So now टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं E naught में से माइनस टर्म हो रहा है, तो टेम्परेचर के साथ ये कम होना चाहिए. But the value of Q also depends on temperature, so that is another aspect that you have to consider. So normally हमारी क्लासेस में हम टेम्परेचर हमेशा फिक्स रखेंगे. तो टेम्परेचर is taken around 27 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन. इतने ही टेम्परेचर पे हम हमेशा रिएक्शन करवाएंगे. So this value R as you know is called universal gas constant 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. टेम्परेचर इज 298 केल्विन, और यहाँ पे जो F है दैट इज कॉल्ड फेराडे कांस्टेंट. फेराडे कांस्टेंट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज इक्वल टू 96500 कूलम approximately. So basically R is a constant, temperature we are keeping it a constant, and Faraday we are also taking it a constant. Finally we get the equation as, if you put the values of these constant, also we will convert natural log to log base 10. We will have 0.059 by n, and then we have log base 10 q. This is our final equation that we are going to use in most of our calculations. Now
let us discuss what is Q and what is N. Let us take an example of an equation. This is solid plus 2 HCl, H2 So here is an equation. As you can see, there are silver has an oxidation state of +1. There are 2 atoms of silver, so overall oxidation becomes +2. Finally, there are 2 atoms which will have oxidation potential of 0. So there is a net change of 2 electrons here. Similarly, hydrogen, oxidation state 0, oxidation state +1. There are 2 atoms, so there will be +2. It also changes from 0 to +2. So there is a net net gain of 2 electrons, and there is a net loss of 2 electrons. So 2 electrons are being lost and 2 electrons are being gained. So here N is basically the number of electrons lost or gained. Alright. So N here is 2. Basically N will depend on the type of reaction. Whatever the reaction you are writing, it will depend on N. So moving on. What about Q? What is Q? In 11th class we read about reaction quotient. This is the same thing. So we write reaction quotient Q as concentration of products HCl raised to the power 2, concentration of Ag raised to the power 2. Oh wait, Ag is pure solid. So a pure solid cannot have any concentration because their activity is 1. So we cannot mention it, silver here. So we are just removing it from our equation. Finally, concentration of reactants. AgCl is again solid. We cannot consider it here. H2. H2 is a gas. So instead of the concentration, we should assume its pressure of H2, because activity of a gas is relates to its pressure and not the concentration. Now, this is our equation. This is the value of Q. So as you can see, we can get a value of Q from the equation, value of N from the equation, and E0 values are fixed. So it will be given in our question, or they will give you a table from which you can look up to it. Alright. Now, moving on, let us take some questions. This is the basic framework. See, you don't have to go in very deep and try to consider all the cases and everything. Questions are very simple. The questions will test your basic knowledge. And as much as I have told you here is sufficient to do any type of question that is possible. Let's see. Yes, sometimes, see, this chapter follows thermodynamics and equilibrium. So after thermodynamics and equilibrium, there are few concepts from these 2 chapters that are going to come up here. So you should be thorough about the knowledge of thermodynamics and equilibrium. Otherwise, you will not be able to do many of these questions that I am going to discuss here. Alright, let's begin. So here is a question. First of all, we will look at this is the cell representation. Now, here the first cell tells you that H2 is being converted into HCl, and in the second cell we have HCl being converted to H2. So we can write this equation as H2 gives 2 HCl and then 2 HCl gets converted into H2. Basically, this is an equilibrium type of reaction. We have started from here, so the pressure of this is the pressure P1 and this is the pressure P2. Clearly, Q will equal to concentration of products, that is the concentration pressure of H2 P2 divided by concentration of reactant P1. The HCl is the same solution, so we are taking the same solution for both the electrodes. So of course it will cancel out. So Q is basically P2 by P1. According to our equation, E equal to E0. Now E0 is the difference between the 2 electrodes. So that will also be 0 minus 0.0
we are given 2.303 RT by F should be 0.06. So we are just going to write it as 0.06 divided by, there are, of course, once again, we have 2 electron change. So we will write 2, then log P2 by P1. Alright, what are we asked? Assume that hydrogen behaves as an ideal gas. What is the EMF of cell at 25 degrees Celsius? If P1 and P2 are this. So we have to calculate EMF, which will simply be 0.03 log. Let's put the value of P2, 420 by 600. Now minus 0.03 log, this will cancel out. 7 by 10, that means we have to take log 7 minus log 10, which is minus 1. So we will get 0.85 minus 1. Finally we have 0.15. So and then 45. So we have 0.0045 volt. That's our answer. So let's take one more question. Alright, let us quickly consider this question also. We have just 20 minutes. So by how much would the oxidizing power? We are talking about oxidizing power of manganese. So that means it is going to oxidize, right? So the equation will be MnO4 minus plus 5 electron gives Mn2 plus. We also have to consider the H plus ion concentration. So we will balance it as, because there are 4 oxygen, so we will write 4 H2O and 4 2s are 8. That means 8 H plus should be balanced. Now this reaction is balanced. We have to consider that if what happens when H plus ion concentration decreases by 100 times, what will be the effect on the oxidizing power? They are talking about oxidizing power, but oxidizing power basically depends on E naught values. So we have to consider what happens to E naught value if you change the E value if you change the concentration of H plus ion. Well, simply E equal to E naught minus RT by NF log product upon reactant. So product, that is concentration of Mn2 plus divided by concentration of MnO4 minus, and then we have H plus raised to the power of 8. Alright, see, here you are decreasing the concentration of H plus ion by 100 times. Alright, so if you decrease the concentration by 100 times, that means 10 to the power 2 and raised to the power 8, that means 10 to the power 16 times will be a factor this is the amount it is going to decrease, right? From the equation itself, if you can see, if you decrease the denominator, the fraction will increase. That means there will be a more negative value, and if there will be a more negative value, it will decrease the value of E. So we can just simply cancel 2 options here. So either our answer is minus 189 or decrease by 90. Let us quickly calculate. We only need to calculate the difference. We don't need to go about solving each and everything here. So if this factor is included here, let me just quickly calculate. 8 times 2 is 16. So I am just going to write it as E equal to E naught minus this 0.06 log 1 by 10 to the power 16. See, I am ignoring all these other things because I know that the difference, finally if I calculate it for H plus, and then I will write one more equation here where with 10 to the power 16, and then I subtract these 2 equations, finally I will be left with, even this will cancel out, I will just finally left with this part. This is the difference between the putting H plus as 10 to the power H plus with power 8 and with 10 to the power 2 raised to the power 8. So anyway, let's do that. We have to divide this by 10 to the power 16. So 10 to the power 16 will go on the numerator side because we have to
divide it, no? Decreases by 100 times. So you divide it by 10 to the power 2. 10 to the power 2 goes above, raised to the power 8. So you finally get this. Then you take the difference from the two equation. You will be left with this only. Let's just quickly calculate what is the value. So 0.06 16 times, and 6 6 is 36, 6 1 is 96. So you get 0.96, which translates to something about 960 millivolts. Oh, I forgot to consider the n value. So n value will be 5, and 96 by 5. Almost made a mistake. By 5, which will be 10 by 2. Something about 192. And there are 2 decimal, 3 decimals. 0.192 or minus 0.192, or basically minus 192 millivolt. So I guess this would be our answer. I haven't taken the exact value 0.0591. Otherwise this would have come somewhere about this value 189. So that's our answer. Thank you so much.